Ladies and gentlemen, what's up? I am Aabir Lahiry. You are watching ABP LIVE Podcasts. Joining me today in conversation is Nidhi Ashok Goyal with her brand new book, And They Lived Ever After. So this is not exactly a book wholly written by her. This is written by Rising Flame, which is also the organization. She's a co-founder and director of this organization. Welcome to the podcast. How are you? I am very well. Thank you, Aabir, for having me here. I'm so excited and thrilled to be having a conversation with you. जब मैंने इस बुक के बारे में पढ़ा, I got a brief कि यार ऐसा book है. Lot of contributors have written this book, Yes. and these are popular stories, like really popular stories. Yes. But with a different twist. I would love to know, like from you, what exactly is the entire plot and क्या change हुआ इन stories में पहले? Right. And they lived ever after से आपको कोई phrase याद आ रहा है? Yeah, of course. Well, it's a very popular phrase. मतलब हर happy story खत्म होती है and they lived ever after. Yeah. So हमने एक word हटा दिया यहाँ से happily. Happily. Right. इसका मतलब ये नहीं कि इन stories में कुछ happiness नहीं है. But we wanted to also say that there is a twist in them. Okay. Right. This is a book, as you said, Rising Flame, where I'm the founder and executive director. We basically have put together this anthology, and HarperCollins has very kindly published this anthology. It's a book which is which has 13 stories by 13 women with disabilities. Okay. So first of all, I'm emphasizing on that is because, you know, who are the authors? The authors are disabled women themselves. Okay. And what are these disabled women doing? They are basically reclaiming the tales. So we call it rewriting the tales, retelling the tales, but I would like to say that they're reclaiming the tales. And what tales are these? Happily ever after, fairy tales, right? And fairy tales में हम हमेशा देखते हैं कि एक तरह का narrative होता है. एक तरह के बहुत सुंदर लोग होते हैं जिनकी एक सुंदर सी दुनिया होती है. उसमें कुछ ना कुछ बुरा होता है, कुछ थोड़ा सा कोई हल्का सा बुरा हो जाता है और फिर वो कुछ एक किसी वैसी से ठीक हो जाता है. एक मैजिक वॉन्ड आता है, उससे सही होता है. एग्जैक्टली. और सब कुछ सही हो जाता है. तो कुछ ना कुछ सही हो जाता है. बहुत जादू, एकदम ओवरवेलमिंगली जादूगिरी से बिल्कुल सब कुछ ठीक होकर. And then there is happily ever after. What we have done in reclaiming these tales is saying that there are different worlds that exist. So what if you're Snow White? And stories of Snow White. But what if the Snow White was deaf? What would have then happened? True. Right? What if Rapunzel was actually a wheelchair user? Why was she in that tower? Because somebody locked her up, or the tower was on some tower is tall and there is no elevator, there's no accessibility. Is that why she was locked in that tower? So what is the story behind Rapunzel? Who could be probably a wheelchair user? Have we ever seen Rapunzel's entire picture? No, we've only seen her long hair. True. But everybody can have long hair, right? Right. So one of the stories that I have authored is basically about Cinderella, and everybody knows Cinderella's story, and movies have been made, and love stories are about Cinderella. You know, I found my Prince Charming, you're my Cinderella, etc., etc. True. What happens to Cinderella after she finds a Prince Charming if she lives with blindness? So moving the stories inside out, forward and backward in time, but also bringing a different angle and making them more relatable, right? Making them about our everyday experiences. So is Ugly Duckling ugly, or what are the bullying and isolation experiences that Ugly Duckling has? तो अगर हम देखें हमारी ज़िंदगी में, हमें ऐसा लगता है कि कुछ ही लोगों को ये आइसोलेशन, हम जैसे ही डिसेबिलिटी कहते हैं बोलते हैं हाँ आपको तो बहुत अलग रखा जाता है, डिस्क्रिमिनेशन होता है, बट हम सभी की ज़िंदगी में कहीं ना कहीं हुआ है. होता है. तो एज रीडर्स हमने या तो स्कूल में या तो सोसाइटी में जहाँ भी जो भी एक्सपीरियंसेस देखें, we'll be able to resonate with these experiences while we are learning through these stories, while we are finding different worlds that we have not imagined and engaged with. Actually तो दुनिया में every 6th person lives with a disability. इस तरह के numbers और data है. बाप रे. But do we in our everyday lives, अगर हम 100 लोगों को जानते हैं तो क्या हर छठा इंसान हमारी ज़िंदगी में disabled है? नहीं है. नहीं है. क्योंकि क्योंकि हमने disabled व्यक्तियों को, people with disabilities को कहीं पर साइड में छोड़ दिया, आइसोलेट कर दिया है. आइसोलेट कर दिया है. सो हमें इनके, मैं इन कह रही हूँ लेकिन मैं खुद डिसेबल्ड हूँ. सो हमें Now I know the stand-up comedian is actually taking the mic. women with disabilities की experiences तो पता चलते हैं, बट कहीं ना कहीं हमें वो relatable इसलिए लगते हैं क्योंकि we realize that there's an underlying human experience in those. True. Right? Of love, of friendship, of rejection, of hopes, of fears, of dreams, most importantly. Yeah. सही बात है. सपना कुछ सोच के थोड़ी आता, सपने तो किसी के पास भी आ सकते हैं. मुझे तो बहुत इंटरेस्टिंग सवाल पूछा जाता है कि आप ब्लाइंड हैं, आप सपने देख पाती हैं?
What is the answer to that? I'm like, जैसे मैं दुनिया देखती हूँ वैसे मैं सपने देखती हूँ. क्या बात है? क्या बात है? यार, अच्छा, let me jump to Rising Flame. Yes. How old is Rising Flame, your organization, और किस thought के साथ बना? Rising Flame ना इस साल 7 साल का हो जाएगा. My God. So we're going to turn 7 this year, and Okay. I'm really excited about it Okay. because it's like your baby turning 7, Agreed. right? Agreed. We call it a feminist disability rights organization. Okay. ठीक है, लोग बोलते हैं आपका NGO. मैंने बोला हाँ, लेकिन feminist disability rights का NGO है. बड़े confused हो जाते हैं लोग कि अच्छा आप women's rights पे काम करते हो? नहीं नहीं, disability rights पे सिर्फ काम करते हैं. I said but feminist lens के साथ, right? We work on these principles because our final goal is inclusion. Okay. और राइजिंग फ्लेम कहाँ से आया? राइजिंग फ्लेम वहाँ से आया जब मैंने अपनी साइट लूज करनी शुरू करी, राइट? सो आई एम ब्लाइंड टुडे, बट आई वाजंट ऑलवेज ब्लाइंड. एज अ किड आई वाज, you know, jumping around, dancing. I'm still doing that, but I was a non-disabled kid, to put it very in short, right? And when I was 14 or 15, I got diagnosed with an incurable, irreversible, progressive, degenerative eye disorder. अरे बाप रे. इतने सारे तो पहले वर्ड्स सुन के टीनेजर बोर हो जाता है कि अच्छा करना भाई साहब क्या ये है, बोल क्या रहे हो, है क्या ये बताओ. Exactly, कि करना क्या है, राइट? है क्या? So in short, the idea was that धीरे 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 करके आंखों की रोशनी चली जाएगी. Okay. Right? And you knew about it. I knew about it. Yes, yes, yes. I was told. Okay. I was told by my parents, right? Okay. But I think that day my biggest concern was अगले दिन history exam है. Right? I was very bad at history. Future में आके history के बारे में सोचेंगे. अभी तो कल जो है tomorrow की history पे focus करते हैं. But the idea was that when I was very, you know, it's not an easy thing to discover. I don't think the news hits you that hard. Because you don't realize what that news means to you in your everyday life, right? ये ऐसा तो नहीं है कि पैरों की तले ज़मीन निकल गई, फिल्म तो नहीं चल रही है. आपको जब वो ज़मीन कैसे धीरे धीरे जा रही है, सब समझ में आने लगता है. So when it's a progressive loss of sight, आप आज रोड क्रॉस कर पा रहे हैं, कल आप मरते मरते बच रहे हैं, right? Because you could see till yesterday, and that thing you cannot see the next day. Agreed. Or the light angle has changed, and so you miss a step, or something else happens, or you really wanted to meet someone in college and you crossed them and you couldn't spot them, right? Or somebody turns around and says you're really arrogant. I was smiling at you and you never returned the smile. So वो जब धीरे धीरे होने लगा, I was quite sad, to put it mildly, and I was thinking कि यार ये क्या है, मतलब ये जो हम सब सोचते हैं कि ये मेरे साथ कैसे हो गया, पर ये क्या हो गया, right? और ऐसा नहीं था कि ये बीमारी क्या होती है, because amongst us 3 siblings, my eldest brother is also blind, and our family was dealing with blindness already. So blindness as a concept was not alien, but you still, self-experience and being a support person is a very different thing, right? And so एक दिन मैं ऐसे बैठी थी, and I have a spiritual guru, और श्री गुरु डॉक्टर बालाजी तांबे, and he said, मैंने उनसे नहीं कहा मैं ये सब सोच रही हूँ, पर मैं बैठी थी उनके सामने, and he said, why are you thinking about why me? I think what you're not doing is looking around, right? You need to go beyond yourself and look at other people in the same situation, and you'll recognize your privileges. And that's the day that enabled me to recognize my privilege, right? That I was in a family which was extremely supportive. There was no question of she's going blind and she's a woman, right? I was told much later that when I was diagnosed, my father's friend, very educated, told him that you hide her disability till 18 and get her married, otherwise she'll be a burden on you all the rest of your life, right? And this was told to me much later when I, you know, had come to terms, had built my own career, life choices, etc., etc. But my family was standing with me like a rock. I had access to education, I had access to caste, class, like all of those privileges were with me, right? And दोस्त कैसे थे? Sorry? दोस्त लोग? बहुत बढ़िया. Very good. I would tell them I have a crush on this person, और 4 लोग मुझे ले जाके उसको क्रॉस करा देते. So cute. So cute. I mean, just from there to like everything else, right? Very Friends, I had so amazing set of ecosystem that was supportive. And that's when I took an oath that I will work towards building this ecosystem for other women and persons like me. I don't know what form that would take. Of course, that happened much later. After my post-graduation in journalism, working on, you know, writing stories on social issues, etc. Then I moved into the development space, and then I founded Rising Flame. But as a teenager, I had taken an oath that I will make a difference and I will create these support systems and create those opportunities that I received for other women and persons like me who live with a disability. Wow, very cool.
एंड अब किस किस फील्ड में इन जनरल काम करता है राइजिंग फ्लेम? किस किस मतलब हाउ डज द इंक्लूजन happens? Like, are you guys associated with corporates, with government, with peer groups? What exactly is the scene? हम सब अपना ही करते हैं. Okay. Sorry. बाकी से हम मांगने से एसोसिएटेड सबके साथ है. Okay. बट करना खुद ही पड़ता है. पर हम विजन अपना ही बढ़ाते हैं. Okay. The whole idea of social, how can inclusion happen, right? Right. How can change happen? There are two ways. ठीक है. One is that, like I said, create opportunities, but also build capacities of directly the community that you're working with, right? And I don't call them beneficiaries; we call them the community, right? Okay. Because they are our community. True. They are not. We are not being benevolent and doing something like हम तुम्हें दे रहे हैं, तुम हमसे ले रहे हो. Agreed. इस तरह के thoughts से हम काम नहीं करते. करना भी नहीं चाहिए. We don't have a charity lens. We have a very rights-based lens. And so we work directly with the community, with Okay. women and youth, to build Okay. their capacities, their skills, their personal growth, development, leadership skills, etc. Okay. And then on the other hand, we work with the ecosystem. Okay. So what do we do with the ecosystem? To give you an example, we train mental health therapists Okay. to make therapy spaces and health spaces more inclusive. Okay. Right? We worked with the government last year in the G20. Okay. Civil society का जो Civil 20 tranche होता है G20 का, in that we were leading the disability and justice work Very cool. across 20 countries to Okay. ensure that in policies persons with disabilities are not missing. Okay. Right? Because it directly impacts, exclusion directly impacts the GDP. If there is no representation, I guess nobody will Correct. be able to Correct. submit the problems or whatever Correct. the challenges So we are. were ensuring participation, representation, and hearing spaces for Very cool. persons with Very cool. disabilities. So, like that, I mean, these are just two examples of how we work with the ecosystem. But this is the way we work with ecosystems, right? So, आप जब तक the person in the center को आप ऊपर उठा रहे हैं और ecosystem को आप साथ में change कर रहे हैं, then holistically the change can happen. Okay. So this is what Rising Flame does. A lot of people, मतलब मैं एकदम layman के point of view से बोलता हूँ. हाँ जी. I may not endorse this statement, but a lot of people say कि अब देखिए और क्या इंक्लूजन किया जा सकता है. इतने सारी जगह हमने व्हील चेयर फ्रेंडली बना दिए हैं, इतनी सारी जगह ब्रेल्स हैं. बट आई वाज वाचिंग वन ऑफ योर वीडियो जस्ट बिफोर दिस. थोड़ा बहुत रिसर्च मैं भी कर लेता हूँ, जैसा आपने थोड़ा बहुत मेरे एक आध वीडियोस देखे, मैंने भी थोड़ा बहुत देखा. मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी लगी. बट ठीक है. ठीक है. तो नहीं, मुझे एक चीज़ बहुत अच्छा पॉइंट लगा कि डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड मशीन्स हैं, हम उसको टच से भी तो बना दे रहे हैं. डू यू रियली थिंक समबडी हु इज विजुअली इम्पेयर्ड विल बी एबल टू हैंडल इट? एंड सडनली मुझे दिमाग में आया कि ओ शिट, हमने ये तो सोचा ही नहीं था. और पहले एटलीस्ट जब बटन्स थे उसमें देयर आर 2 डॉट्स, तो आपको पता चल जाता है कौन सा की कहाँ पे प्लेस्ड है. जी. कि अब तो क्या है, 1 जहाँ पे हर बार 1 वहाँ पे रहेगा भी नहीं टच के टाइम पे. इट्स अ शफल थिंग. तो आई एम लाइक ओ शिट, ये तो गलत है, लॉजिकली गलत है. हाउ मेनी सच एनेक्डोट्स डू यू सी अराउंड यू? सो मेनी अभी, सो मेनी. मेरा एक सिंपल सवाल है ना, जो लोग कहते हैं कि हमने व्हीलचेयर यूजर फ्रेंडली बना दिया, ठीक है. एक तो हमने डिसेबिलिटी को एक व्हीलचेयर बना दिया, ठीक है. जहाँ हम देखेंगे एक व्हीलचेयर का साइन लगा देते हैं और हमें लगता है हमने डिसेबिलिटी इंक्लूजन कर दिया, राइट. बट उससे भी पहले मैं ये कहना चाहती हूँ कि व्हेन द वर्ल्ड, अगर आज उठकर दिल्ली के आधे पॉपुलेशन को अगर साउथ, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट में डिवाइड करें दिल्ली को, ठीक है, उसमें से साउथ दिल्ली वालों को अगर हम बोल दें, ठीक है, कि हमने देखो 3/4 दिल्ली को तो ओपन रखा है, तुम्हारे लिए सिर्फ बंद रखा है, तो तुम इतना मच क्यों कर रहे हो? हम बोल पाएंगे किसी सिटीजन को ये? नहीं. पर हम विकलांग लोगों को बड़ी आसानी से बोल देते कि तुम्हें ये 4 जगह तो जाने मिल रही है ना, अब तुम्हें 10 जगह भी जाना है. तुम्हारे लिए 2 ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स तो हमने एक्सेसिबल बना दिए ना, अब तुम्हें वहाँ 4थी जगह से भी शॉपिंग करनी है. सुखी रहो ना, इतना एक्सेस है तो. But what we are saying is that we somehow want to give something to disabled people, that we are the superior ones trying to create access for them. We are also saying that what is for everyone is not for you. There will be selected things for you, right? अगर हमने 10 टावर्स बनाए, इस कॉम्प्लेक्स में सपोज 10 टावर्स हैं, 9 में एलिवेटर लगाया, 10वें में नहीं लगाया, वहाँ के फ्लैट्स बिकेंगे? नहीं बिकेंगे, ऑफ कोर्स नहीं बिकेंगे. पर हम उठकर ये तो नहीं कहते लोगों से कि तुम रोज 12 मंजिल नहीं चढ़ पाते हो, ये तो तुम्हारी फॉल्ट है. पर हम विकलांग व्यक्तियों को ये कहते हैं कि तुम 4 सीढ़ी नहीं चढ़ पाते और तुम्हें रैंप चाहिए, ये तुम्हारी फॉल्ट है. एंड सो
when as a woman, and I'll just tell you my experience, right? We often crib कि भाई disabled लोग तो बड़े independent नहीं होते, उन्हें हर चीज़ में मदद लगती है, burden है भाई society पे. These are very everyday conversations. You say it or you imply it. It's a very everyday experience, right? Now अब मेरे बैंक अकाउंट में पैसे हैं, पर बैंक की वेबसाइट accessible नहीं है, तो मैं पेमेंट नहीं कर सकती उन पैसों से. तो मैं कमा सकती हूँ, मैं खर्च नहीं कर सकती, राइट? अगर कोई और फिजिकली डिसेबल्ड है, वो एटीएम से विड्रॉ नहीं कर सकता क्योंकि आपने एटीएम को इनएक्सेसिबल जगह पे बना दिया, 4 सीढ़ियाँ लगा दी हैं, ठीक है? You're talking about not allowing us to live independent lives. So when you are a vendor, you're a commercial, you're a corporate, you're a startup, are we thinking that are our products for all? When we say it's for all, who is that all? All. And who are we not thinking Like, what is the about definition in of that all? Nobody has this clarity. Exactly. And how do you guys provide a policy change to? Do you guys provide consultancy also to like corporates to create it more inclusive? See, we conduct trainings for corporates as well. Okay. Okay. Yeah. And And we work with other organizations, right? Okay. Who need accessibility, inclusion, like policies made, trainings done, systems in place, team sensitizations. Like some of that is in our ecosystems work. Okay. Recently, we also conducted for a corporate and their partners the whole concept of what accessible communication and documentation effectively would look like. Okay. Right? So a range of things. But our primary focus is inclusion. And for that, we work with people, so women and youth with disabilities, and really also build their own leadership qualities, right? So build their capacities. क्योंकि ये भी सुनने मिलता है कि हम तो करने को तैयार हैं, पर लोग कहाँ हैं? ये भी सही बात है, हाँ, सही बात है. Right? So we work on both sides together. Okay. But ये जो एक बात है ना कि लोग कहाँ हैं, छुपे हुए हैं, invisible हैं, right? Most of the times we say people with disabilities don't come out of their homes. That's why we don't see them enough. And this book is really an attempt, one of the attempts that we are making towards this. That you see us, you hear us, and you live through our experiences through these stories. True. मतलब मुझे लगता है कि ये स्टेटमेंट वेग भी अगर कोई बोलता है कि कहाँ हैं लोग, अगर आप ढूंढना चाहो तो भगवान मिलते हैं, अगर आप ढूंढो तो सब कुछ आजू बाजू मिल सकता है. हमें भगवान भी बोल सकते हैं, आप कोई बात नहीं. सही बात है, सही बात है. अच्छा, coming back to the same thing, would you mind sharing some real life examples जहाँ पे एक्चुअली डिसेबिलिटी को लोग इग्नोर करके जा रहे हैं? लाइक एक क्रेडिट डेबिट कार्ड मशीन बहुत कॉमन चीज़ है, हम देखते हैं. एनीथिंग एल्स जो एज अ लेमैन को कई बार पता ही नहीं होगा, लेकिन मे बी योर आंसर में लाइक गिव देम अ माइंड बॉगलिंग थॉट कि बॉस ये है, आपने कभी सोचा ही नहीं है. ये तो जैसे मैंने आपको एक एलिवेटर का एग्जांपल दिया, राइट? कि जो हम एवरीडे में हमारे लिए जो हमने सुविधाएं बनाई है, राइट? द फैसिलिटीज दैट वी हैव क्रिएटेड फॉर अस, वी डोंट कॉल देम फैसिलिटीज, वी जस्ट कॉल देम एवरीडे लाइक एक्सपीरियंस, राइट? इट्स अ नॉर्म, बट ऑल्सो इट्स एन एवरीडे. लाइक कौन बनाता है यार? तुमने बिल्डिंग नहीं बनाई, एलिवेटर के बिना बनाई, तो तुम्हारी प्रॉब्लम है, राइट? सो व्हाट वी हैव क्रिएटेड फॉर अस एंड व्हाट वी कॉल additional provisions for disabled people, right? ये टच स्क्रीन्स का तो बहुत इंटरेस्टिंग मसला है, बिकॉज द POS मशीन, द क्रेडिट कार्ड मशीन इज़ वन ऑफ सच थिंग्स. आपके ऑनलाइन बैंकिंग इज़ द अदर थिंग. जब मैं 3 साल पहले गुड़गांव में शिफ्ट हुई, राइट? सो द सोसाइटी दैट वी वर लिविंग इन had actually elevators that are only touch screen panels. So it was so interesting कि मैं because I live with blindness, मैं पूरी दुनिया घूमती थी काम के लिए, लेकिन मेरी खुद की बिल्डिंग अपार्टमेंट में मुझे ऊपर नीचे घर से एग्जिट करने में I needed support, right? And it became a very interesting exercise for me. Also for folks, right? जो हम टैक्सीज देखते हैं, are all the taxi apps accessible? हैं, ऐसा नहीं कह रही हूँ सब नहीं है, बट मैं बोल रही हूँ एवरीडे चीज़ें जो ई कॉमर्स ऐप्स है, राइट? बहुत एक्साइटमेंट होता है, सेल लगी है. हाँ, ट्रू. आई हैव टू रीच आउट टू फ्रेंड्स सेइंग कौन फ्री है भाई, सेल लगी है, मुझे खरीदी करनी है. बिकॉज आई एम योर फ्रेंड, नेक्स्ट टाइम इफ यू एक्चुअली नीड हेल्प, आई होप कि वो बन जाए, वो ज़्यादा इंक्लूसिव हो. आई रियली होप दैट. बट अगर नहीं होता तब तक बिंदास गिव मी अ कॉल एनी टाइम यू नीड हेल्प. ठीक है. सो जस्ट टू गिव यू, आई मीन, you know, we have apps that have now become accessible, so there is also progress because the community is collectively working towards it. Like Rising Flame एक अकेला थोड़ी है, right? Agreed. So apps where you could, like, carpenter घर आ सकते हैं, electrician घर आ सकते हैं, वो सब facilities हम नहीं avail कर पाते थे, और अब वो accessible हो गया है, तो suddenly उनको भी realize होगा कि उनका user base बढ़ गया है. True.
बट हम क्योंकि प्राइमरीली डिसेबल्ड लोगों को यूजर्स देखते नहीं हैं, इसलिए वो सुविधाएं बनती ये हैं। नंबर का गेम इतना ज्यादा हो गया है ना, सब सोचते हैं कि अरे इतना पोर्शन है, इससे हमारा क्या रेवेन्यू आएगा, नोबडी थिंक्स अबाउट द बिगर पिक्चर। नहीं, पर रेवेन्यू आता है। सो आता इफ है, यू बिल्कुल वांट टू आता है। मेक अ बिजनेस केस, देयर आर मेनी स्टडीज टू मेक अ बिजनेस केस, राइट? G20 में एक मैं लास्ट बताना चाहूंगी कि हमारा सबसे बड़ा केस था फॉर अ सेपरेट स्पेस फॉर डिसेबिलिटी एंड डिसेबिलिटी इंक्लूजन एंड लीडरशिप, कि अगर द कॉस्ट ऑफ एक्सक्लूजन, एंड दीज आर ग्लोबल स्टडीज, राइट? ओके, अगर आप डिसेबल्ड व्यक्तियों को इकोनॉमी से और इकोनॉमिक रिलेटेड पूरे अपॉर्चुनिटी और इकोसिस्टम से बाहर रखेंगे, योर जीडीपी कैन टेक अ हिट अप टू 7%। ओ बाप रे, ये कितना बड़ा नंबर हो जाता है वो आप खुद समझ सकते हैं। सो नंबर्स के गेम में भी हम भाई आगे हैं, पर समझना और इसे स्वीकारना इज अ वेरी डिफरेंट थिंग। अच्छा, एक सवाल जो मैं मतलब कल मैं अपनी टीम से भी डिस्कस कर रहा था, एंड दे आल्सो सेड वन थिंग कि ज़रूर पूछना एंड बिल्कुल ऑनेस्टली आंसर देना, मतलब अगर लगता है कि फिगर्स बहुत ही बुरे हैं तो वो भी बता देना। अ लॉट ऑफ टाइम बिग कंपनीज लाइक बिग एमएनसीज, बड़े बड़े एकदम टेक जायंट्स कंपनीज, दे से दैट वी प्रमोट इंक्लूजन, इफ यू हैव दिस डिसेबिलिटी फिल अप द फॉर्म, मतलब जो भी है, इफ यू नीड एंड वील हायर, वो हम सब कम्युनिटीज से हर जेंडर से सब जगह से हर पीपल विद डिसेबिलिटीज हायर करते हैं। बट इज इट एक्चुअली द केस? क्या जब हम उस ऑफिस के फ्लोर में देखते हैं, क्या हम एक्चुअली डिसेबल्ड लोगों को देखते हैं वहाँ पे? सो दो मुद्दे हैं, राइट? ओके, ये आप देख रहे हैं और इसको भी हम प्रोग्रेस कहेंगे, राइट? फॉर अग्रीड, हाँ, मतलब आज से 20 साल 25 साल पहले तो हाँ, बहुत वो है। भी नहीं होता था, राइट? फॉर डिवर्सिटी एंड इंक्लूजन, फॉर क्रेडिट्स, फॉर वट एवर, ठीक है, ये हो रहा है, हो रहा है। सो एक हम पॉजिटिव से शुरू करेंगे कि इसको हम प्रोग्रेस करेंगे। दूसरा जो हम देख रहे हैं ना, अबीर, द बिगेस्ट कंसर्न इज कि हम कहीं ना कहीं डिसेबिलिटी से डरते हैं। दूर तो भागते हैं, वो एक अलग बात है, एफर्ट नहीं लेना चाहते, वो भी एक अलग बात है, समझना नहीं चाहते, वो भी एक अलग बात है, बट हम डरते भी हैं, राइट? सो हम क्या देखेंगे कि बहुत सारा, ये वर्ड थोड़ा हार्श हो जाता है पर मैं यूज़ करूँगी, टोकनिज्म हो रहा है। एंड व्हाट इज टोकनिज्म, राइट? सो हम किसको पैर में थोड़ी सी डिसेबिलिटी है, उससे हम कैंडिडेट बना के ले आते हैं, तो उसकी फंक्शनिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, राइट? सो आपने अपना डिसेबिलिटी का वो भी पूरा कर कोटा दिया, भी पूरा कर दिया, मैंडेट भी पूरा कर दिया, और आपने एक्चुअल डिफरेंस ज़्यादा नहीं बनाया, राइट? सो देयर आर एक्चुअल जॉब के जो अनाउंसमेंट्स होते हैं, वहाँ कहते हैं कि फुल्ली ब्लाइंड नहीं चलेगा, फुल्ली लाइक दीज आर यू नो हु कैन बी अब्जॉर्ब्ड, राइट? और फिर ये कॉन्वर्सेशन गवर्नमेंट करने लगती है कि हम ना मैपिंग करते हैं कि डिसेबल्ड लोग कौन सा जॉब कर पाएंगे, पर जॉब कर पाएंगे मतलब पहले आपने कैपेसिटी और अकोमोडेशंस बिल्ड किए क्या उसमें? आप मुझे बोलेंगे ये तो ब्लाइंड नहीं कर सकता, सही बात है, आप स्क्रीन रीडर नहीं लगाएंगे तो मैं जॉब नहीं कर पाऊंगी, सही बात है, पर स्क्रीन रीडर लगाएंगे तो, सो व्हाट इज इट? इट्स कॉल्ड रीजनेबल अकोमोडेशन, राइट? तो हमें वो लैंग्वेज की जगह हम करने लगते हैं कि कैपेबिलिटी नहीं है, लैंग्वेज वहाँ से शुरू करते हैं। सो चलो भाई, इनको भी, ये भी डिसेबल कैटेगरी में आते हैं, तो इनको थोड़ा कम है डिसेबिलिटी, बट इनको तो शुरू करते हैं, फिर हम आगे देखेंगे, और आगे तो कभी आता ही नहीं है। एग्जैक्टली। सो हम उसके आगे बढ़ नहीं पाते क्योंकि एक आसान रास्ता ले लेते हैं, एक डर भी होता है, और एक हम अपने कंफर्ट से बाहर नहीं जाना चाहते, और ले भी लिया तो उसके आगे हम टीम्स को सेंसिटाइज नहीं करते, इंक्लूजन पर काम नहीं करते। आप कैसे, अगर ऑल मेन टीम में एक वुमन होगी और आपने कभी जेंडर की बात नहीं की, तो वो कभी वुमन वॉट एवर शी सेज, इवन इफ शी रीचेस अ लीडरशिप पोजीशन, शी विल नेवर बी इंक्लूडेड और कंफर्टेबल इन दैट टीम। ट्रू, वेरी वेल सेड। आर देयर एनी गुड वर्क्स? अगर हम बात करेंगे सब अगर लो हैंगिंग फ्रूट ही देखते हैं, बट कुछ होंगे जो बहुत अच्छा काम कर रहे होंगे। बहुत बहुत सारे हैं। मैं वही कह रही हूँ कि प्रोग्रेस तो है, हमें ऐसे नहीं शुरू करना है कि प्रोग्रेस नहीं है। बिल्कुल सही बात है। देयर आर मेनी ऑर्गेनाइजेशंस दैट आर investing heavily in working and training persons with intellectual disabilities. Very cool. As complicated as it gets, right? Wow. What will a full working day look like for them? What kind of supports they would need? What kind of trainings can we give to the teams? और यहाँ पर there is enough and more examples even within the corporates for other corporates to learn from. Very cool. So हम बैठ के NGO वाले नहीं चला रहे जो NGO वाले लोगों को ये क्योंकि टर्म हो गया है that you know these NGO guys, ये होता होगा ना कई बार गए, मैडम आप NGO वाले हो क्या? हाँ तो गवर्नमेंट में भी बहुत होता है कि आप NGO वाले आ जाते हो उठकर, और हम कहते सर कोलैबोरेशन के लिए आए हैं, बट सो इट्स नॉट अबाउट यू नो कमिंग फ्रॉम द साइड ऑफ द NGO. You have your own brethren,
sister organizations, etc., putting these systems in place. All we need to do is that willingness to explore and learn, and commitment to build this inclusive spaces. Asya, I remember I was a radio producer and I spoke to somebody. She's also from Mumbai. She runs this startup called Barrier Break. I Yes, don't remember. Shilpi. Shilpi, right? Shilpi Kapoor, I think. Yes. Shilpi. कितने सालों बाद ये नाम अचानक से strike हुआ. They are only creating technology for Yes. Yes. disabled people. Yes. है ना? Yes. Such a nice concept. I'm like, wow, एक dedicated space है Yes. just for this, and they are doing some fantastic work. Yes. A lot of innovations in that space. Yes. Very cool, very cool. अच्छा, जब बुक लिखना स्टार्ट किया या सबने बोला चलो मतलब वापस हम बुक पे आते हैं क्योंकि हम थोड़ा अलग अलग यहाँ चीज़ों में चले चले गए गए, थे. yes. जब हम आपने सोचा कि चलो यार बुक बनाते हैं, what kind of stories does anybody get? These are popular fiction stories. Yes. But किन disabilities को इसमें cover किया गया है? So जो लोग थे उनकी जो डिसेबिलिटी थी, Okay. क्योंकि हमने एक दो तीन बातें बताई थी उन्हें, Okay. that you have to include your realities, your experiences, ठीक है, right? ठीक है. So not your means it's not moving away from the genre of fiction, Okay. right? So it's not like you can read my story and say, "Acha, this all has happened to Nidhi." No, that all But has not consider happened. you are to the Nidhi. Cinderella. So I have made the Cinderella blind, Okay. right? ठीक है. And someone who is autistic has made the ugly duckling autistic. Okay. Right? Snow White, the deaf Snow White who has written, is a woman who's deaf. Okay. Right? So they had to bring their disability experiences Okay. into the story, and they had to rewrite fairy tales. These were the two things that were given, of course, with the word count, etc., the technical pieces. ठीक है. But this was the whole idea. Okay. It started from a whole journey of self-reflection, right? It was so interesting because हमारी जो author जिनको हमने invite किया to facilitate this workshop, right? Okay. So Rising Flame invited a consultant who is an award-winning author Okay. to facilitate a workshop with the women first. And there were more women, right? There were not just 13 women. Okay. There were nearly 20 women from South Asia. There were Okay. also women from Nepal Okay. who did not take the stories ahead. So we have stories by Indian and Sri Lankan authors now. Okay. But all of these women, the whole batch, was thinking together and going through this workshop of learning the craft, but also of taking that space to mold their stories, or how to interweave their own realities into these popular tales. Did they want to move it in time? Did they want to shift the character? You'll see there are two Cinderellas in the book, okay? Okay. One Cinderella is written by me, where the disabled character is the Cinderella, right? There is the other Cinderella, which is from the point of view of Cinderella's sister. Oh. And we've never thought about her, True. right? True. So she writes from the point of view of Cinderella's sister. I write from a point of view where Cinderella is Punjabi and is set in a Punjabi household, right? Wow. So you'll see other fairy tales which are based in South Indian families. Like really, how things are shifting and have been claimed not just through disability, but through culture, through context, through realities. So this was a brief given, but also Aditi Rao and something so beautiful that she said कि this was the space. एक तो COVID का समय था, virtual workshop थी, and so many women had moving experiences, right? One of the authors I remember said that it was a whole time where I actually came to terms with all like I reflected on the kinds of experiences that I've had because I was disabled. मैंने बहुत सारी बार उसे shut करके रख दिया था because they're not always easy experiences to Agreed. deal with, right? So she shut it in a tight drawer, and this workshop helped her open that drawer but also deal with it and express through that pain, right? Our facilitator, she basically said कि this was the first time where she could articulate कि भाई मेरी भी access needs हैं. So this is an access need, and she didn't feel judged because it was a safe space where everybody and all diversities were included. Right. So, and then we also worked with an editor, Richa Kolpadite, again an author who had written Cyber Sexy. Okay. And so she took us through and also lives with a disability, a chronic illness basically. Okay. And she took all the, after the workshop, took the stories through the whole intense editing process. Such a collaborative effort, man. And our team, of course, my colleague Srinidhi, who took this entire initiative and was leading on this, implementation of this project, also lives with a disability. So we are anyway, Rising Flame is what we call a self-led team, Okay. a team where majority of us live
with either a disability, chronic illness, or mental health condition. So, Okay. yeah. एक सजेशन दूं एज अ फ्रेंड, हाँ जी. इसको किसी ने ना नेटफ्लिक्स को पिच करना, Yes, yes. बहुत क्रेजी वेब सीरीज बनेगी. Okay, so we are here and डोंट वरी, मेरा शो कोई नहीं देखता है, गिन के on, 10-12 Aabir. लोग होंगे. नहीं, अब नहीं. उसमें से नेटफ्लिक्स तक या So, प्राइम मेरा तक तो पहुंचना थोड़ा डिफिकल्ट है. नेटफ्लिक्स तक तो बिल्कुल पहुंचेंगे, मतलब OTT प्लेटफॉर्म्स तक. हाँ. बट मेरा तो एक सपना है अबीर, आपने पूछा ही नहीं कुछ भी, बट मैं खुद बता हाँ, देती हूँ. प्लीज. मेरा तो एक सपना है कि मेरी और मेरे हस्बैंड की इतनी फिल्मी लव स्टोरी कि एक दिन मैं उससे करण जौहर को बेचूंगी. प्लीज बताओ यार, like a 30-second elevator pitch. Karan Johar, if you are watching this podcast, what is the story? हमारी before we fell in love, we were friends for 8 long years. Oh, बाप रे. And we've of course seen each other go through different phases of life. Agreed. But we were also those friends who were like, he was chatting with men from my Tinder account so that I could get and I was introducing him to single I mean, like women. such good friends, एकदम बिंदास बढ़िया. Absolutely. Very cool. It's very advantageous. तो इसमें बॉलीवुड वाला क्या एंगल है, मतलब इतनी बहुत सारे फिल्म एंगल्स हैं, वो जैसे मैं सारा बता दूंगी. अच्छा, तो मज़ा नहीं स्टोरी आएगा. लीक हो जाएगी यार. हाँ. वो स्क्रीन पे खुद लिखना है और खुद प्रेजेंट करना है. Yes, yes. Makes मज़ा sense. नहीं आएगा, बट आई थिंक मेरा चार्मिंग फेस देखकर और थोड़ा सा स्टोरी का शुरुआत देखकर करण जौहर will reach out to me someday. Agreed. Karan, if you're watching this podcast, again, a message from Nidhi to you. Chaliye, lastly, what is the message to all those people who are watching this podcast? Agreed, they should read this book, of Absolutely. course. But what is your bigger message to all of them? How to treat somebody with disability? How to make this society more inclusive? And whatever you want to say. मेरा सबसे इम्पॉर्टेंट मैसेज जो है सभी के लिए, राइट, दैट इफ़ वी लीव ऑल दीज आइडेंटिटीज असाइड, और एक थॉट से अगर हम शुरुआत करें, दैट ईच ऑफ अस इज़ अ ह्यूमन बीइंग फर्स्ट, अ ह्यूमन विद आवर ओन सेट ऑफ एक्सपीरियंसेस, challenges, stories, ways of working, thinking, talking, it will help us navigate through more than half of the barriers that we have created. सबसे बड़ा चैलेंज है कि हम कुछ ग्रुप्स को डीह्यूमनाइज कर देते हैं. उनके सारे जो एक्सपीरियंसेस हैं उनको रिड्यूस कर देते हैं. सो व्हेन अ डिसेबल्ड पर्सन वॉक्स इनटू द रूम, यू डोंट सी देम एज अ डिसेबल्ड पर्सन, you see them as someone using a white cane, someone using a wheelchair. And often you'll see कि colleges में कहीं भी people will remember saying हाँ वो wheelchair वाली मैडम या वो blind sir जो हैं, वो हमें क्यों याद रह जाते हैं? Because we are reducing people to one aspect of their lives. So सबसे पहले is to treat everyone like human beings. Second, to appreciate the difference. All of us are different. No two disabled people are also the same. Appreciating and valuing differences. And third is a very simple thing. To engage with someone with a disability, you simply need to ask, how do I do this, right? When I meet someone, they simply ask me, can I help you and how can I help you? And I just tell them, please offer, if it's okay with you, can I hold on to your elbow? इतना simple हो जाता है conversation rather than fumbling and thinking and getting stressed and saying, जाने दो यार, कोई blind को next time से बुलाएंगे नहीं, right? I think steps are very simple. It's not complicated. It's not rocket science. But what we really need to do is take the first step and the others will fall in place. What a sweet message. On that note, बहुत शुक्रिया for joining me in this conversation. बहुत मज़ा आया आपसे बात करके. It was lovely having this conversation with you. I really hope a lot of people read this book. Yes. And they lived ever after. Disabled Women Retell Fairy Tales by Rising Flame, and this is published by HarperCollins. Thank you very much. Thank you so much, Aabir, and I hope to see all of you with a copy in your hand. Thank you. Bye-bye.